Good morning, everyone. How are you all? I hope every one of you are fine. So, today we are going to start with genetics. But before going to genetics, what we are going to start? We are going to start with the genetics. But before starting genetics, there are certain terms which one should know. These terms are very, very important to know about genetics, to start about genetics. If these terms are not known to you, then the topic genetics will not be clear. Okay, so I'll start one by one with all the terms of genetics. So the first term is character. Now, what is character in sense of genetics? जैसे हम लोकली बोलते हैं कैरेक्टर, वी यूज द टर्म कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है. सो ये वो कैरेक्टर नहीं है. व्हाट डज कैरेक्टर मीन्स इन जेनेटिक्स? In genetics, when we talk about character, then character is used to the phenotypic property of an individual. Phenotypic property means किसी organism का किसी इंडिविजुअल की अपीयरेंस कैसी है, उसके हाइट कैसी है, उसका स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके हेयर कैसे हैं, उसकी नोज की शेप कैसी है, उसकी वॉइस कैसी है. These all are called character. Clear? Now the next important term is trait. Now what is trait then? Trait are those characters which are inherited. Inherited means transferred from one generation to next generation. So traits are those characters which are passed from one generation to next generation. As we can say that I have curly hair. So I have got this trait from my father. Clear? My daughter is also having curly hair as I am having. So she has got this trait of curly hair from me. So that is curly hair. Clear? Now the next term which you should know from here is the unit factor. Children, one most important thing which you should know about genetics is about Mendel. Mendel is known as father of genetics. And when Mendel was there, at that particular time, he was not aware about the term gene. So he used the term factor instead of gene. So sometimes it is asked that which term do Mendel use for gene? So Mendel used the term factor in order to express a gene. Now, what is gene? Very, very important. What is gene actually? So from here in the NEET question is asked that who has given the term gene for the first time. So as I told that Mendel used to call gene as factor, and it was Johansen who used the term first of all gene in the year 1909. Now what is a gene? Gene is actually a unit of inheritance. जो क्या करता है? Which carry character from one generation to next generation. Means पेरेंट्स के फीचर्स, पेरेंट्स के कैरेक्टर किस तक लेके जाता है? उनके चिल्ड्रन तक. एंड हाउ डू जीन कैसे पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक पहुंचता है? You have studied about sexual reproduction. You know that in sexual reproduction, parents make gametes. What do they produce? They produce gametes. And within the gametes, there are present genes. And when these gametes they fuse together, then they form a new child. So we can say that genes are the unit of inheritance. They are carrying characters from parents to the next generation. And where these genes are actually? So genes occur in a chromosome. They are a part of chromosome and they control a particular expression. And how do it control? What does it mean that gene control a particular expression? It means that as I am saying that my skin color is whitish complexion, I am having whitish complexion. So we know that the complexion of a body, what will be the skin color? It depends upon a pigment known as melanin. मिलानिन पिगमेंट जो हमारी बॉडी में बनता है डिपेंड्स अपॉन दिस कि जिसमें जितना ज़्यादा मिलानिन होगा उसका स्किन का कॉम्प्लेक्शन उतना ज़्यादा डार्क होगा. अब किसी की बॉडी में कम मिलानिन है, समवन इज हैविंग लेस अमाउंट ऑफ मिलानिन while other is having more amount of melanin. It depends upon what? It depends upon the type of gene one is having. If you are having such a gene, actually if you are having such a gene which produces more melanin, then our skin complexion will be dark. If we have such a gene which produces less melanin, then the skin complexion will be fairer. So we can say that our gene control our character.
And how do it control character? Gene is actually DNA. We will discuss in detail about the structure of gene. Gene is actually DNA, and DNA make a particular protein. And by making that particular protein, it will decide that which kind of character we are going to have. Clear? So is that clear what is a gene? So we can say that gene is a unit of inheritance. It occurs on a chromosome. It is a part of chromosome, that is more appropriate, and it carry the characters from one generation to another generation. Then the next term is symbol used for genes. So different symbols are used for genes. Like each trait is given a symbol. So there are two conventions for allotting symbols. First is after the dominant trait, and second is after the recessive. Means for every gene uh, we denote a particular gene with certain symbol. जैसे suppose we are talking about the gene which control height. कौन सा जीन के बारे में बात कर रहे हैं हम? We are talking about the gene which control height. So we can have two type of height. A person can have two, means any one of the two type of height. एक होती है tall height और एक होती है dwarf height, छोटी हाइट, शॉर्ट हाइट. तो जिसकी टॉल हाइट होगी, we will represent it with the T, and this T is dominant. I'll tell what does dominant means. So it is written capital, and that another which is having dwarf height, it is written with the small t, not d. It is represented with the small t. So this is how a gene is represented. So gene is represented through symbols. हाइट के लिए जो जीन है, हमने उसको देख लिया कि हाइट दो तरह की हो सकती है, टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट. तो टॉल हाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट हाइट को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच यू शुड नो फ्रॉम हियर इज एलील. What is allele actually? What is allele? Very important, and you should know in NEET it is important that who has given this term. It was given by Batsman in 1905. Allele क्या होता है? Allele are alternate forms of same gene. That is called allele. मतलब एक ही जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, that is called gene, allele. That is called allele. As I can give you example, as just now I told that character was height. ठीक है, तो हाइट जो है दो तरीके की हो सकती है. Someone can have tall height while other can have dwarf height. So we can say that tall and dwarf are two alternative forms of a gene. Which gene it is? It is the gene which control height. How many alternative forms can be there? Two. It can be a tall height, it can be a dwarf height. So we can say that tall and dwarf are the two alleles. So what are alleles? We can say alternative form of same gene, जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं लेकिन अलग अलग तरह से वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट टाइप ऑफ हेयर, so type of hair is a character. Every character is controlled by a gene, so there will be gene to control a type of character here. But some of us are having curly hair, someone may have straight hair. So curly hair and straight hair are the two alternate type of the gene which control a single character, that is the type of hair. Character क्या है? Type of hair. लेकिन उसमें भी आगे दो टाइप हैं. It can be curly, it can be straight. So the alternative form of same gene are called allele. So this is clear, I think. Very important it is. So you should learn the definition. Now the next important term is locus. What is locus means? As you know that gene is a segment of chromosome, or it is written that a particular fix. If this I have drawn a chromosome. On the chromosome there are present large number of genes. Means one chromosome carries a lot of genes. Clear? As I have drawn here, at this particular place, suppose there is gene number 1, then here is gene number 2, at this place there is gene number 3. So every gene is having a fixed position on the chromosome. So
The position of a chromosome, position of a gene on a chromosome is called its location or its locus. So what do you understand by locus now? What can we say? Locus is the location of a gene at particular place on the chromosome. Clear? So what is a locus? A fixed position or place on a chromosome that is occupied by a particular gene, particular that is occupied by a given gene or its allele, that is called its locus. Very, very important this term is. Now next one is dominant gene and recessive gene, or dominant factor or recessive factor. As I told that there can be for the height, there are two allele for the height. One of the height is tall height, another height is dwarf height. ठीक है? So these are the two alternative form of height. Now, out of these two, tall and dwarf, a single individual at one time, either he can be tall or he can be dwarf. या तो लंबा होगा या छोटा होगा. ऐसा तो नहीं है कि दोनों होगा, लंबा भी है छोटा भी है. It will not be there. या तो वो लंबा होगा या वो छोटा होगा. तो उन दोनों कैरेक्टर्स में से, उन दोनों एलील में से वो पर्टिकुलर एलील जो अपने आप को, अब क्या होता है, whenever sexual reproduction take place, during sexual reproduction what happen, or we can say that in every organism which are formed by sexual reproduction, like human being we are there, we have two genes for a one character. एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास हमेशा दो जीन होते हैं. जैसे कि हाइट है, तो हाइट के लिए we can have capital T and capital T. This may be the condition in every cell of a body. It can be small t or small t, or it can be capital T and small t. ठीक है? अगर ये कंडीशन है तो कैपिटल T इज अ डोमिनेंट जीन. एक्चुअली यहाँ पे मैंने दोनों को ही स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ मैंने एक को डोमिनेंट से और एक को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है. देन व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई आई हैव टेकन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर डिफरेंटली? एक्चुअली व्हाट हैपन, यहाँ पे टॉल, यहाँ पे कैपिटल वाला जो है वो टॉल को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल टी है इट रिप्रेजेंट द ड्वार्फनेस. ठीक है? तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में ये वाली कंडीशन हो कि एक जीन कैपिटल है दूसरा जीन स्मॉल है, तो क्या होता है, ये जो कैपिटल वाला जीन रिप्रेजेंट हो रहा है, इस पर्टिकुलर जीन को बोलते हैं डोमिनेंट जीन. क्यों इसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं? बिकॉज जब डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, तो डोमिनेंट जीन अपनी ही चलाता है. मीन्स ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो ये बोलेगा वही होगा, दूसरे वाले जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं देता. तो डोमिनेंट जीन वो जीन होता है which expresses itself and do not let the recessive gene to express. अब कोई जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है? कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है by making a particular type of protein. ठीक है? तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये वाली कंडीशन है कि एक जीन कैपिटल टॉल है, कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो क्या होता है, हमेशा कैपिटल टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. एक्सप्रेस कैसे करेगा? बाय मेकिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन. और वो जो प्रोटीन होती है दैट इज एक्चुअली अ ग्रोथ फैक्टर. क्या होता है? वो ग्रोथ फैक्टर होता है वो प्रोटीन. और जब ज्यादा ग्रोथ फैक्टर बन रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म की ज्यादा ग्रोथ होगी. दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिज्म विल बी अ टॉल ऑर्गेनिज्म. बट अगर ये कंडीशन जब है तो सिर्फ कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस करने नहीं देता. स्मॉल टी जब एक्सप्रेस करता है तो उसकी वजह से जो प्रोटीन बनती है इट प्रोड्यूसेस लेस ग्रोथ फैक्टर. बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ विल बी लेस एंड अ शॉर्ट हाइट ऑर्गेनिज्म विल बी प्रोड्यूस्ड. सो डोमिनेंट जीन क्या होता है? व्हाट इज अ डोमिनेंट जीन? सो वी कैन से दैट डोमिनेंट जीन इज द जीन which is capable, is that allele out of the two. ठीक है? allele में ही चलता है ये dominant recessive. Dominant allele is that allele which is capable to express itself. ठीक है? And do not let the other gene to express itself. Do not let the other allele to express itself.
उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन, और डोमिनेंट जीन को हमेशा हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा टर्म है दैट इज अ रिसेसिव जीन. नाउ व्हाट इज अ रिसेसिव जीन? Recessive gene is actually that gene which is not capable to express itself. As I told just now that if in certain person there is present this condition, तो इस केस में ये जो डोमिनेंट जीन है यही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की हाइट टॉल होगी, और ये उस ड्वार्फ वाले, इस छोटे वाले रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस करने नहीं देगा. तो वी कैन डिफाइन रिसेसिव जीन एज द जीन which is not capable to express itself in the presence of a dominant gene. That is called a recessive gene, and it is always represented by a small letter. ठीक है. Now इसका मतलब क्या ये है कि क्या रिसेसिव जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता? नो, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस करता है जब दोनों ही जीन्स कैसे हों? रिसेसिव हों. अब इस टाइम पे इस कंडीशन में अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इस तरह के जीन्स हैं तो इसमें कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही रिसेसिव हैं, तो दोनों रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और इनकी वजह से जब वो एक्सप्रेस करेंगे दे विल मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन. तो वो जो प्रोटीन बनाते हैं दैट इज लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ फैक्टर लेस बनेंगे जिससे ग्रोथ कम होगी, एंड द पर्सन विल रिमेन dwarf in height. So that is called a recessive gene. Clear? Now next one is wild or and mutant gene. Now what is that? What is a wild and mutant gene? The wild gene is one which was originally present in the population, जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, जिसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है, जो एज इट इज था, दैट इज कॉल्ड द वाइल्ड टाइप, and that type is dominant and usually wild spread. But जो recessive allele is less common and is believed to form from the mutation of the wild allele, उसको बोलते हैं म्यूटेटेड एलील. तो हमेशा ध्यान रखना जो डोमिनेंट जीन होता है ना, जो डोमिनेंट एलील होता है, डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज द वाइल्ड एलील, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन पे. लेकिन हमें पता है डीएनए में रेप्लिकेशन जब होती है तो डीएनए हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें म्यूटेशन आती रहती है, और म्यूटेशन आने की वजह से जो एलील फिर बन जाता है उस एलील को हम बोलते हैं म्यूटेंट एलील. इधर दैट इज कॉल्ड म्यूटेंट एलील, और वही म्यूटेंट एलील इज नोन एज is actually the recessive allele also. Children, nowadays coronavirus is very famous. Because of that we all are stuck inside the houses only. So you might have heard कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन आ रही है. तो जब सबसे पहले कोरोना वायरस का चांस जो केस आया चाइना में, सो इन द चाइना जो फर्स्ट कोरोना वायरस का जो ये था आरएनए था, इट इज एन आरएनए वायरस, उसका जो आरएनए था इट वाज डिफरेंट, बट ड्यू टू म्यूटेशन, अब जैसे वो रेप्लिकेट करता गया, म्यूटेशन की वजह से उसमें क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं. सो वी कैन से दैट द फर्स्ट वाज द वाइल्ड टाइप, एंड नाउ वी आर गेटिंग द mutant one of that. Clear? Okay. Now here is given difference between a dominant allele and a recessive allele. So go through the difference. Very important it is. Dominant allele is that which is capable to express itself even in the presence of a recessive allele. But recessive allele is that which is capable to express only when both are recessive. It is not capable to express when other one is dominant. Next difference क्या है कि it does not require another similar allele to produce its effect. That you know. अगर डोमिनेंट ये वाली कंडीशन है तो दूसरा अगर स्मॉल भी है तब भी ये डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है. इसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा जीन अपने जैसे होने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन रिसेसिव जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? रिसेसिव जीन विल एक्सप्रेस ओनली दैट टाइम व्हेन द अदर जीन इज ऑल्सो ऑफ रिसेसिव टाइप. नेक्स्ट इज द डोमिनेंट एलील कैन फॉर्म द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम. पूरा एंजाइम बनाता है for expressing the effect. That's why complete effect is produced here. लेकिन जो रिसेसिव जीन है वो इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव पॉलीपेप्टाइड बनाता है. अभी हम पढ़ेंगे इसको. जैसे मैंने बताया ना अभी कि एक होता है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी. अब जब कैपिटल टी प्रेजेंट है, इट इज डीएनए ओनली, तो ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. ठीक है. और इसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगी
that protein will make proper growth factor, और उसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ होगी and the organism will have tall height. ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट द स्मॉल टी, जो स्मॉल टी है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो जो प्रोटीन बनेगी दैट विल नॉट बी अ कंप्लीट प्रोटीन और कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, जिससे प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर नहीं बन पाएगा एंड द ऑर्गेनिज्म विल हैव अ ड्वार्फ हाइट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज homozygous and heterozygous. What does it mean? As I told that every organism have two gene for a particular character. जैसे हम बात कर रहे हैं height की, तो for height there are two gene, capital T and small t. ठीक है, capital T and small t. But it may be there that in a person both the genes can be capital. This may be the condition. It may be the condition that both the genes may be small like this. It may be the condition that one can be capital and other can be dwarf. ठीक है. This condition, when both the allele of a gene are identical, then these kind of organism are called homozygous organism. Homo means same. तो homozygous organism वो organism होते हैं in which both the allele are same. And if we talk about this one, here one of the allele is for capital T, another is small t. So this is called heterozygous. Heterozygous. Clear? So you can have a look here, homozygous. So or homozygote or homozygous individual बोलते हैं उसको. This term was introduced by Batson and Snoder. Okay. Now what it is actually, now definition they have given, it is an individual which contain identical allele of a gene. That is called homozygous organism. And if we talk about heterozygous organism, then it is an individual which contain two contrasting factors, two different allele of a particular gene. Then that is called heterozygous organism. Clear? Okay, sufficient for today. Thank you.